Thank you for joining us on the live report, getting you pictures from Lucknow of a hit and run as a 12th class student rams into several vehicles in a high-impact crash that has been reported. A 6-year-old has been killed. We have that and the latest numbers coming in from Bangladesh. We have a new government in Bangladesh. Yunus is gone, a new government will take over, and it is going to be Tarique Rahman's government. Someone who's been engaging with India in the last few weeks. Getting interesting. Here are the headlines on the live report. Speeding vehicle rams into a bike, an auto rickshaw, 6 injured, a 6-year-old has been killed. The car was being driven by a class 12 student. His girlfriend was also in the car. They fled the scene after the accident, later arrested. Elections are done. Tarique Rahman is the new Bangladesh Prime Minister, wins a majority of seats in Bangladesh. Jamaat, interestingly, winning the border seats in Bangladesh. Is that a concern for India? Pakistan complains about the India map put out by the US trade representative body after the trade deal is concerned. US took down the map on Pakistan's request. Will India pull up America? And controversy in Tamil Nadu ahead of elections. Just weeks before the polls, Stalin government announces a big SOP for women. Says all the women in the state are going to get a payout. On top of 12 p.m, we're getting you these pictures, CCTV pictures that came in from Lucknow a few minutes back. These pictures came into our newsroom of a crash that took place last night. Now that is the CCTV footage. A car crashed into several vehicles on a busy road, and the car was being driven by a class 12 student who was returning from a farewell party in Lucknow. While returning from a farewell party, this car rams into several bikes, vehicles. The impact and the speed was such that the car drove on and dragged several vehicles almost 200 meters. As a result of the impact, a 6-year-old child has also been killed in this accident. Look at that. And both of them, that is both the driver of this vehicle and the girlfriend, ran from the scene. Adarsh is joining us live. Adarsh, ये क्लास 12 का स्टूडेंट था क्या? I mean, वो क्या डिटेल्स है हमारे पास ये ड्राइवर के बारे में? Who was driving the car? Who was in the car? And where were they coming from? देखिए, बिल्कुल जो शुरुआती जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक एक 12th क्लास का लड़का उसके साथ उसकी एक महिला साथी इस कार में मौजूद थे। लड़के का नाम गौरव सिंह बताया जा रहा है, जो एक्सीडेंट के बाद फरार हो गया था, लेकिन उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसका एड्रेस जो है वो बख्शी का तालाब लखनऊ बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि हादसा करीब 6 से 7 बजे के बीच में हुआ, जब ये बिजी रोड पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। और हादसे में ये ऑटो जो है वो भी पलटा था, और इसमें तमाम ब्लड स्टेन जो है और ऑटो की जो कंडीशन है बाहर से वो देख के समझ में आ रही है कि हादसा आखिर कितना भीषण था। और सीसीटीवी फुटेज से भी दिखने में मिल रहा है कि आखिर कितने लोगों को चलते हुए ये गाड़ी आगे गई है। क्या नाम है आपका? शिव देवी। ये आप जी ऑटो थे, वो ऑटो चालक आपके पति हैं? हाँ, पति है हमारे। अभी क्या स्थिति है? हॉस्पिटल में है वो? हॉस्पिटल में है, सिटी स्कैन होने गया है। क्या स्थिति है? वो ठीक है? कैसे स्थिति ठीक नहीं है, दिमाग की चोट लगी है ज्यादा। क्या बताया गया आप लोगों को? हादसा कैसे हुआ? कोई मौजूद था आप लोगों में? नहीं, यहाँ कोई नहीं। हादसा बस ऐसे ही हुआ कि गाड़ी चालक आने मतलब बहुत तेजी से आ रहा था, ये गाड़ी उधर जा रही थी, बस आया, बस टक्कर मार के चला गया।
बस और अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर जो चश्मदीद है उनसे मेरी बातचीत जो हुई है उसके मुताबिक हादसे के बाद वो करीब 200 मीटर तक गाड़ी लड़ने के बाद भी लेकर जाता रहा और उसके बाद वहाँ से गाड़ी छोड़कर फरार हो गया है। फिलहाल अभी तक इस मामले में तहरीर जो है वो पुलिस को नहीं मिली थी, लेकिन तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी गौरव सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि इस बात की भी जाँच की जा रही है कि आखिर क्या वो किसी नशे के इन्फ्लुएंस में तो नहीं था, क्योंकि हमने जो कार को इंस्पेक्ट किया है, कार में जो अंदर बहुत सारी पानी की बॉटल्स और नमकीन के पैकेट देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर पुलिस इस एंगल पर भी तलाश कर रही है कि आखिर क्या वो किसी नशे के इन्फ्लुएंस में नहीं था। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है क्योंकि वो 12वीं क्लास का स्टूडेंट था, तो ऐसे में क्या वो बालिग था या नहीं था, इसके साथ साथ इसका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ था या नहीं, इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। Okay, these are the pictures. That's the by the way the pictures of the crash, the car damaged, and this is the CCTV footage. The moment the crash happened, the aftermath of the crash, the people who were injured. Look at that. That's the video. People running onto the road seconds after the crash, and the speed of the car. Look at the speed of the car. This CCTV footage captures the speed of the car the moment it hit several bikes and an auto rickshaw. The driver of the auto rickshaw is critical. We just spoke to his family. I think his wife just spoke to Adarsh, our correspondent there. And this is the immediate aftermath of that crash. This CCTV footage shows the crash and the aftermath of the crash as well. And now this is the picture of the car that was involved in the accident. We were told that a student who was returning from a farewell party was behind the wheels along with his girlfriend. This is what we are hearing. And that is a still picture of the 6-year-old who was killed in this hit and run case. Let me go back to Adarsh. Adarsh is joining us live from Lucknow. He's at the spot. Was he drinking under the influence of alcohol? ये जो अभी कानपुर में हुआ, किसी को पता भी नहीं कि हुआ क्या था वहाँ पे. Was he under the influence of alcohol? ये शिवम मिश्रा जो है, शिवम मिश्रा is out on bail. किसी को पता भी नहीं चला कि उसका ब्लड सैंपल लिया गया. उसका was he under influence of alcohol? इस केस में have blood samples been taken? देखिए बिल्कुल, जो पुलिस गिरफ्तारी के बाद सबसे पहला काम है वो उसका मेडिकल करवाएगी. मेडिकल में इस बात की जांच की जाएगी कि उसका ब्लड सैंपल लिया जाए, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा के समय तक अगर उसने अल्कोहल लिया हुआ है तो वो उसके ब्लड स्ट्रीम में मौजूद होगा. ब्लड सैंपल लेने के बाद ही पुलिस कंफर्म कर पाएगी, उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कि आखिर उसको वो ब्लड सैंपल में उसके साथ अल्कोहल मिला है या नहीं मिला है. लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन जो हमने रिपब्लिक ने इन्वेस्टिगेशन की है उसमें लिक्कर बॉटल्स तो नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन पानी की बहुत सारी बॉटल्स जो हैं वो कार के अंदर दिखाई दे रही हैं. वो ज़रूर एक सवाल पैदा करता है कि आखिर क्या कुछ हो रहा था. और निश्चित तौर पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उसका ड्राइविंग लाइसेंस बना था या नहीं था, क्योंकि कानपुर के केस में शिवम मिश्रा के ड्राइविंग लाइसेंस होने की वजह से नियमों में जो ढील मिली उसको, इसकी वजह से उसका जो बेल है वो कंफर्म हुई, उसको बेल मिल गई. लेकिन अगर ड्राइविंग लाइसेंस इस लड़के का नहीं होगा जो कि अब बालिग बताया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये मामला बिगड़ सकता है. निश्चित तौर पर कड़ी सजा हो सकती है, क्योंकि इसमें एक बच्चे की मौत हुई है और 4 से 5 से ज़्यादा लोग घायल हैं. रोड पर नेग्लिजेंस ड्राइविंग के साथ साथ इस पे तमाम केस जो है वो बनेंगे. तो निश्चित तौर पर पुलिस इस एंगल पर तलाश कर रही है कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस था या नहीं था, और साथ ही साथ उसके पेरेंट्स भी इस पूरे कार्रवाई के घेरे में आ सकते हैं कि आखिर उन्होंने गाड़ी दी तो क्यों दी, और इसके साथ साथ उस पर कोई निगरानी क्यों नहीं हुई. Okay, thank you for joining us with those details. Adarsh, at the site where a 6-year-old was killed in Lucknow, Uttar Pradesh. Ladies and gentlemen, after almost 2 years since the regime change operation in Bangladesh, when Sheikh Hasina was forced into exile, she fled to India and her government fell in Dhaka. We have a new Prime Minister, a new likely Prime Minister, because officially he hasn't taken over. Tarique Rahman's party, which is the BNP, Khalida Zia's party, her son Tarique Rahman is set to be the new Bangladesh Prime Minister. And he returned to Bangladesh a few days back after all the cases against him were closed. And as far as BNP is concerned, what is in store between Dhaka and Delhi? Our Foreign Minister, S. Jaishankar, has met Tarique Rahman in Dhaka a few weeks ago. And all eyes will be on whether Tarique Rahman's party
improves relations with India or not. As far as this particular election goes, last evening, pictures came in of possible rigging. Okay, we have some breaking news coming in, ladies and gentlemen. As we keep a close eye on that and go across to Dhaka, we have a live speech coming in of the Agriculture Minister. Let's go across straight to Shivraj Singh Chauhan. और आज मुझे माननीय सभापति महोदय ये कहते हुए गर्व है कि इस योजना के अंतर्गत 44,243 कस्टम हायरिंग सेंटर, जिसमें पंजाब में भी बने, 25,854 प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर, 25,565 फार्म हार्वेस्ट ऑटोमेशन, 17,779 वेयर हाउस, 4,201 सॉर्टिंग और ग्रेडिंग यूनिट, स्मार्ट और प्रिसिजन एग्रीकल्चर के लिए 3,549 इंफ्रास्ट्रक्चर और 2,827 कोल्ड स्टोरेज भी बने। और माननीय सभापति महोदय, इसके कारण जो फसलों का नुकसान होता था, फल और सब्जियों का नुकसान होता था, उस नुकसान में 5 से लेकर 15% तक की कमी आई। अब हमारे फल सुरक्षित है, किसान उनको कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं, हमारे अनाज को भी सुरक्षित रखा जा सकता है, एफपीओज को भी। माननीय सभापति महोदय, ये एग्री इंफ्रा फंड के अंतर्गत अलग अलग तरह के वेयर हाउस हो, कोल्ड स्टोरेज हो, बनाने की सुविधा दी जाती है। और जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे, पंजाब में भी माननीय सभापति महोदय 152 एफपीओज हैं जो लगातार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए मिलकर प्रयत्नरत है। उन्होंने केवल इतना कहा है कि ये राशि अपर्याप्त है, क्या इसको बढ़ाएंगे? पहले तो कुछ थी ही नहीं, अब इतने कोल्ड स्टोरेज से लेकर राइपनिंग चेंबर से लेकर अलग अलग तरह की संरचनाओं का निर्माण हो रहा है। मैं तो डॉक्टर साहब से भी निवेदन करना चाहूंगा, वो पंजाब सरकार से बात करें और प्रोत्साहित करें एफपीओज बनाने के लिए, किसानों को और संगठित करने का काम करें। हालांकि पैक्स का आंदोलन इतना मजबूत है कि जो हमारी सहकारी समितियां हैं वो भी कस्टम हायरिंग सेंटर जैसी कई केंद्र खोलकर किसानों की सेवा करने का काम कर रही है। तो एफपीओज को भी इन संरचनाओं के निर्माण का काम मिल रहा है और एफपीओज का भी इन परियोजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। आपने जो राशि बढ़ाने की बात कही है, उचित समय पर उस पर विचार करेंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि अभी तो ये पर्याप्त है। सेकंड सप्लीमेंट्री डॉक्टर विक्रमजीत सिंह सरानी जी। आपने स्टोरेज की बात की है कि आगे से 15-20% बढ़ा है, लेकिन अभी भी पंजाब में सर आपको पता है पैडी व्हीट का स्टोरेज कंस्ट्रेंट है, तो हमें मिलके कुछ को। Okay, we had to cut across to Parliament because the Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan was speaking on the US trade deal. We'll get you excerpts of what he mentioned about the trade deal in a short while from now on Republic. Meanwhile, our focus was on the Bangladesh elections where Tarique Rahman has won the election. His party, the BNP, has won the election. I'd like to go across straight to our correspondent in Dhaka, Yasir. Yasir has been reporting for Republic from Dhaka in the last 36 hours. Yasir, what's the final number? If you can give us the final number now and the verdict so far, how are the numbers looking for the different stakeholders in Bangladesh? Thank you. The final results are already out, and the BNP has already taken 200 plus seats on the parliament, and this is going well. And in Dhaka, they are not, they are practicing the thing that they already, the prayer of the Friday is started in our country. And in Bangladesh, there is a normal thing that people are, people go on a rally when any kind of parties win on election, but there is no rally today happening here in Bangladesh. The rare thing is they are going to be on a prayer, on a dua at after the Jummah. So this is the rarest thing happen in Bangladesh today right now. It's a big win. It's a two-third majority victory. We are hearing of the Jamaat also making big gains across different parts of Bangladesh.
If you can tell us where mostly the Jamaat is winning this election, is it close to the border with India? Jamaat is winning almost 60 plus seats in the parliament. It's almost 65 almost. So here in Dhaka there are a few seats, and mainly the seats are at Rangpur, at Gaibandha, and these places are the most seats. Just stay with me, Yasir. This was the tweet of our Prime Minister, who conveyed his congratulations to Tarique Rahman on leading BNP to a decisive victory in the Bangladesh elections, and is saying that the victory shows trust of the people of Bangladesh in his leadership. And very interesting, it comes at a time when Sheikh Hasina is in India. She is in exile. Her party was banned from contesting. Prime Minister saying India will continue to stand in support of a democratic, progressive and inclusive Bangladesh. Democratic, progressive and inclusive. Is Tarique Rahman's party democratic, inclusive vis-a-vis minorities? Now, we don't know what their stand is going to be vis-a-vis Delhi. They have met few leaders from India. Let me go back. Let's go to the pictures and go back to Yasir. Yasir, what is likely to be his party's position, or his government's position towards India? All right. From very early, India is our friend. So Tarique Rahman and the BNP, Bangladesh Nationalist Party, always wants to have a good friendship with India. And you are talking about the thing that Narendra Modi ji congratulates and tells us to have democratic and the clean politics in Bangladesh. So in Bangladesh, Tarique Rahman and the party they win has promised to have democratic leadership in our country. In July 2024, there was a very big movement by the students, and on that they promised about they will always remember that many martyrs many students are being killed during the Sheikh Hasina's period. So on that period, the killers should always be punished on a right way, and that's about this democracy and our relationship with India. Okay, thank you for that. Thank you for that, Yasir. Tarique Rahman said to be the next Prime Minister of Bangladesh. Ladies and gentlemen, let's move on to the next story now. Air India wrote to families of the Ahmedabad crash victims, reportedly offering an additional 10 lakh rupees. But there was a condition. Sign away your right to sue, not just Air India, but even Boeing, GE, etc. forever. Republic has accessed this letter, and even Air India put out a statement. There were some families, in fact, which questioned Air India. There was some backlash that came in. Air India then issued a statement trying to clarify the reason behind the extra added compensation, what they called a final compensation. Here's everything that you need to know about the controversy. In a development that has sparked outrage, Air India has written to families of the crash victims. Republic has accessed this letter. The sender is Air India with an offer of an additional rupees 10 lakhs. The airline had already paid rupees 25 lakhs as interim relief. Now comes rupees 10 lakh more. But there is a condition. Families must irrevocably and forever release their right to sue, now or in the future.
The agreement requires families to confirm that they have no future claims against Air India or anyone else, including aircraft manufacturers. Families are being asked to sign this document and surrender all their legal rights, whether they are now or in the future. Once the families sign this document, there is no second chance for them to legally pursue their cases. The most shocking part is with the airline, the plane manufacturer is also being protected here. That means once a family signs this, they are giving up their right to sue the plane manufacturer or all the big companies who are mentioned in this release form. Loss of precious life cannot be reduced to just a small number. This settlement offer ignores lifelong emotional harm, loss of companionship, loss of love, and it is focusing mostly on the financial aspect. Experts call Air India's move illegal. This is absolutely illegal. You cannot cap the life of a person to 10 lakhs. You see, this is nothing but blackmail. And also saying that you cannot file a case or a counter case against other companies. What have you got to do with those companies? Why are you taking up their matter? That is a separate issue. If I am aggrieved with, say, Boeing, or if I am aggrieved with, say, General Electric, if I am aggrieved with somebody else, I have a right. It's my fundamental right. This is in violation of the articles of the Constitution. Article 14, Article 21, it violates that. No sane company should be giving a letter like this. How can you curtail somebody's liberties and say that no, you cannot, I'll give you X amount? I mean, to be very honest with you, 10 lakhs, is that the value of a life in India? Is that what Air India is saying, that a person who dies in an air crash, his life is only 10 lakhs? It is really sad that a company like Air India should be doing something like this. And they are sending this letter when the investigation is on. Investigation is not closed, and they are sending money. They are saying they will send money of 10 lakhs. They have given 25 lakhs, and now they are giving 10 lakhs. So total cost is 35 lakhs. Now, if I remember, see, first of all, the compensation that is to be paid to a dead person depends on a lot of factors. The factors is the age of the deceased who died. What was he earning? What is the age factor till which he could earn? All these are computed and then a sum is arrived at. Even if you go to a court, accident court, they will laugh if you say that his life is, somebody travelling by air, his life is only worth 10 lakhs. For families, it is a life-altering decision. मेरे को 20-25 दिन के बाद और इंडिया वाले का फ़ोन आया था, बोले आप वहाँ थे? मैंने बोला हाँ था। तो बोले ठीक है, आप यहाँ ताज होटल पे आ जाइए और आपका कुछ डॉक्यूमेंट लेके आइए, ऐसा बोला था। और हम ताज होटल चले। अच्छा, वहाँ पे आपने कुछ फॉर्म वगैरह साइन किए थे? वहाँ पे हमको फॉर्म पहले भरवाया था। अच्छा, और उसके बाद वहाँ पे उसी टाइम पेमेंट दे दिया था? नहीं, उसके बाद घर पे आ गए थे और करीब हफ्ते या 10 दिन के बाद वापस फ़ोन आया था और मेरा नाम पूछ के मेरे को बोला कि इतनी अमाउंट तुम्हारी पास हुई है। जब मैंने अमाउंट आपको ऑफर किया था? हमको 3 लाख रुपए ऑफर किया था। जब मैंने मैडम को बोला कि 3 लाख रुपए मैडम बहुत कम ऑफर है, पास हुआ है, तो बोले वो तो ऊपर से जो हमारे पास करते हैं वो हम आपको बताया है। आपको ये क्यों लग रहा था कि 3 लाख रुपए कम है? क्योंकि आपकी कोई जिम्मेदारी घर के अंदर, आप बड़े हो क्या? मैं बड़ा हूँ और मेरे पे जिम्मेदारी, मेरे 2 son है, 2 बहू है, 1 मिसेज है, 2 भाई है, मम्मी पापा है नहीं। मम्मी पापा 10-12 वर्ष हो गए, गुजर गए और सारी घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है? घर की जिम्मेदारी सब मेरे पे। अच्छा, तो उसके बाद आपने जो उनको फॉर्म कोई साइन करके दिया था जिसके बाद आपको पैसा मिला था? हाँ, जब पास हुआ, जब हमको बुलाया वापस, कॉल बोले आ जाओ तुम यहाँ ताज होटल पे, अगर मेरे को कोई लाभ नहीं मिलेगा और कोई साइन नहीं मिलेगी तो जो टाटा कंपनी वाले ने 3 लाख हमको दिए, मैं वो वापस लौटाने को तैयार हूँ और मैं मेरे हक के लिए लड़ने को तैयार हूँ। Republic has also accessed the agreement acceptance letter, a document that seals the waiver. After immense backlash, Air India has released a statement alleging clarity about the compensation offered to the families. They claim that the clause about no claims against Air India is important
to ensure that the process is final and to prevent Air India from receiving any direct or indirect claims in the future. Air India's subtle attempt at ensuring that they stay out of legal trouble by promising more money to grieving families have raised a very serious question. Is Air India trying to evade accountability with money?